So, welcome and welcome back to my channel. Today, we are going to start with Macbeth Act 1, Scene 3, ISC Class 12, which is of Introduction to Act 1, Scene 3. Act 1, Scene 3 is one of the most important scenes in Macbeth because the question might come, why it is so important? Then you have to write these reasons. The first, which met Macbeth and Banquo for first time, they have prediction that began Macbeth's tragic journey. Macbeth starts thinking about becoming king. The scene introduces the theme of ambition versus morality. Scene setting: after the victory in battle, Macbeth and Banquo are returning to Scotland on a heath, an open barren land. They encounter the three witches. The witches greet Macbeth with three titles: Thane of Glamis, Thane of Cawdor, future King of Scotland. They greet Banquo differently. He will be less than Macbeth, yet greater, not as happy, yet happier. He will be he will not be king, but his descendants will become king. Part 1. The witches appear. Key lines: all hail Macbeth, hail to thee. Thane of Glamis, all hail Macbeth, hail to thee. Thane of Cawdor, all hail Macbeth, that shalt be king thereafter. Explanation: the witches use the phrase all hail to horror Macbeth and tempt him. Thane of Glamis: Macbeth already holds this title. टाइटल मतलब कि थेन ऑफ ग्लैमस, जैसे कि हम लोग के राजा और महाराजाओं में ये प्रथा था कि सेनापति कोई बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई ये बनेगा, कोई वो बनेगा. देखना आप पुराने कोई मूवीज़ वगैरह में, ठीक है, वो सब देता है. सेनापति पीछे चलो, मंत्री सामने आओ, ऐसा करके राजा लोग ऑर्डर देते हैं. वैसे ये सब जो है वो एक उपाधि है जो कि दिया जाता है. Macbeth may become king in future. This prophecy awakened hidden ambition in Macbeth. ये जो प्रोफेंसी है ना, वो मैकबेथ को एक अच्छा व्यक्ति से गंदा व्यक्ति कर देगा. चलिए देखते हैं कैसे. पार्ट 2. Banquo's reaction. Banquo is spectacle and cautious. What can the devil speak true? उसके मन में ये है कि एक शैतान जो है वो कैसे सच बोल सकता है. Explanation. Banquo is surprised that evil beings can tell the truth. He understands the supernatural forces may reveal small truth to lure people towards destruction. Banquo serves as Macbeth's foil. Macbeth becomes fascinated. Banquo remains rational and normally strong. अब जो है ना, बैंक्यू और मैकबेथ के बीच में भी दुश्मनी हो जाता है बहुत. ये स्टोरी का आगे वाला पार्ट है जो कि आई थिंक एक्ट 4-5 में लिखा होगा. ये स्टोरी का आगे वाला पार्ट है जिसमें वो मैकबेथ जो है वो बैंक्यू को मार देता है, क्योंकि
वो राजा बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और बैंक्यू जो है उसको समझ आ जाता है कि मैकबेथ ने ही किंग डंकन को मारा था, और पर वो किसी को बोलता नहीं है, यही कारण है। Ross and Angus confirms the prophecies. Soon after witches vanish, Ross and Angus arrive and inform Macbeth that King Duncan has made him the new Thane of Cawdor. ये जो रॉस और एंगस है, वो दोनों जो है वो मैकबेथ को क्लियर कट जो है विचेस का ये बता देता है, ठीक है, कंफर्म हो जाता है ये लोग थ्रू से, क्योंकि ये लोग है राजा के द्वारपाल जैसे नहीं बोलते हैं, वो लोग में से एक लोग, तो वो लोग जो है डनकन के द्वारपाल थे, रॉस एंड एंगस। उन्होंने मैकबेथ के पास राजा डनकन ने उन्हें मैकबेथ के पास भेजा था, क्योंकि उन्हें थेन ऑफ कॉडर बनाया गया है ये इंफॉर्मेशन मैकबेथ को देने। This confirms the second prophecy and makes Macbeth wonder if the third prophecy will become true. So, अब ये जो है मैकबेथ के दिमाग में चल रहा है वो राजा बन जाएगा कि नहीं। I think today's class is going to be 20 minutes, but I will distribute it in 2 parts. Part 4, Macbeth's soliloquy. If chance will have me king, why chance may crown me without my stir? Explanation: Macbeth initially hopes fate will make him king without any action on his part. However, the thoughts soon became darker. यानी कि मन के अंदर जो शैतानी दिमाग है, शैतान है, वो बोलने लगा कि नहीं, अब राजा डनकन को मारना ज़रूरी है। Another important line, my thought, whose mother yet is but parasitical. This shows Macbeth is already imagining murder, even no one has suggested it directly. हम आगे कहानी में यही पढ़ते हैं, लेडी मैकबेथ जो है वो उसको मतलब कि ये देती है, बट हाँ मैकबेथ का भी दिमाग उसी ओर था। Banquo's warning, key lines, instruments. The instrument of darkness tells us truth, win us with honest trifles to betray in deepest consequence. Explanation: Banquo warns that evil force may tell partial truth to devise people into committing terrible acts. ये जो बैंक्यू जो बोल रहा है ना, वो बोल रहा है कि हमारे अंदर की जो खराब मतलब कि शैतानी दिमाग है, वो जो बोलता है कि भाई इसको मार देना चाहिए ऐसा करके, ठीक है, वो हमें मतलब कि एक बहुत गंदा चीज़ करना, किसी को मारना इज़ नॉट गुड, राइट? दिस इज़ वन of the most important lines in the play. Yeah, this is very most important line. Themes in Act 1, Scene 3. What are the themes? It could be asked by your teacher. Number 1, ambition. Number 2, faith and free will.
Number 3, supernatural power. Number 4, appearance versus reality. Number 5th, good versus evil. Now let's see ambition. Macbeth's desire for power to designate his thoughts. वो एक अच्छा इंसान से बुरा इंसान बनने के लिए रेडी हो गया क्योंकि उसे राजा बनना था, वो उसका एम्बिशन बन गया. Fate and free will. The prophecies raises the question, will Macbeth become king by destiny or by his own action? ये जो प्रोफेंसी है यानी कि फ्यूचर देखने का टैलेंट, तो वो मैकबेथ को राजा बनाएगा या फिर खुद से राजा बनाएगा या फिर वो अपने कुछ गलत कर्मों के लिए राजा बनेगा. सुपर नेचुरल पावर. The witches represent the evil and temptation. Appearance versus reality. The witches speaks truth, but their purpose is deceptive. Good versus evil. Banquo resists temptation. Macbeth is drawn toward it. इस लाइन का यही मतलब है कि जो बैंक्यू है वो तो सोचता है कि मैं आज सही रास्ते में चलूँगा तो मैं ज़रूर बनूँगा कुछ ना कुछ, पर मैकबेथ जो है वो गलत रास्ते से जाके राजा बनना चाहता था. कैरेक्टर डेवलप्ड. मैकबेथ ब्रेव एंड रिस्पेक्टेड शोल्डर, क्यूरियस एंड एम्बिशियस, begins to complete evil. Banquo wise and cautious, morally upright, suspicious of the witches. Witches, agent of chaos and temptation. Important literally devices. Prophecy, foil, soliloquy, paradox. What is a paradox? It can be asked, and what is a prophecy? It could be asked. Significance of the scene. This scene is turning point of the play. Before this scene, Macbeth is loyal and horrible. Before this scene, Macbeth is loyal and honorable. I think it has written horrible, but honorable, honest. Macbeth begins to imagine murder and kingship. The witches do not force Macbeth, they awaken the desire already with him. Act 1, Scene 3. The moment when ambition enters Macbeth's mind, the witches plan the sheet, but Macbeth chooses to nurture it. Banquo's caution contrasts sharply with Macbeth's growing obsession, impacting Shakespeare's message that unchecked ambition can destroy even a noble person. The questions which might be asked: how do witches influence Macbeth in Act 1, Scene 3? Question 2. Explain Macbeth's warning about instruments of darkness. Question 3. Discuss the theme of fate and free will in this scene. Question 4. How does Macbeth's character begin to change? Question 5. Why is Act 1, Scene 3 considered a turning point? One line summary. The witches awaken ambition by predicting that he will become king, setting him on the path of tragedy. Thank you, and that's all for today's video. We will meet again on next video. Please like, share and subscribe my channel